कल सुबह 9 बजे मैं अपनी परीक्षा लिख रहा हूँगा। Tomorrow at 9 a.m. I will be writing my examination. Tomorrow at 9 a.m. I will be writing my examination. इस समय अगले सप्ताह हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे होंगे। This time next week, we will be climbing the mountain peak. This time next week, we will be climbing the mountain peak. क्या आप आधी रात को भी अपना शोध जारी रख रहे होंगे? Will you be continuing your research even at midnight? Will you be continuing your research even at midnight? जब आप उसे फोन करेंगे, वह अपना प्रस्तुतिकरण दे रही होगी। When you call her, she will be giving her presentation. When you call her, she will be giving her presentation. सोमवार की शाम को वे सब शहर के नए रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे। On Monday evening, they all will be dining at the city's new restaurant. On Monday evening, they all will be dining at the city's new restaurant. शाम 5 बजे माली पूरे बगीचे में पानी दे रहा होगा। At 5 p.m., the gardener will be watering the entire garden. At 5 p.m., the gardener will be watering the entire garden. अगले महीने की पहली तारीख को मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँगा। On the 1st of next month, I will be starting a new project. On the 1st of next month, I will be starting a new project. हम दोपहर तक अपने बच्चों का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। We will not be waiting for our children until noon. We will not be waiting for our children until noon. क्या वह सुबह की उड़ान से पहले अपने बैग पैक कर रही होगी? Will she be packing her bags before the morning flight? Will she be packing her bags before the morning flight? उस समय तक सूरज क्षितिज के पार डूब रहा होगा। By that time, the sun will be setting beyond the horizon. By that time, the sun will be setting beyond the horizon. जब मैं उनसे मिलूंगा, वे एक जटिल समस्या हल कर रहे होंगे। When I meet them, they will be solving a complex problem. When I meet them, they will be solving a complex problem. इस समय कल पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों का दौरा कर रहे होंगे। At this time tomorrow, tourists will be visiting the historical sites. At this time tomorrow, tourists will be visiting the historical sites. क्या आप पूरे सप्ताहांतीय उपन्यास पढ़ते रहेंगे? Will you be reading this novel all weekend? Will you be reading this novel all weekend? जब बिजली जाएगी तो हम मोमबत्ती की रोशनी में बातें कर रहे होंगे। When the power goes out, we will be talking by candlelight. When the power goes out, we will be talking by candlelight. वे तब तक एक महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे होंगे। They will be contemplating an important decision by then. They will be contemplating an important decision by then. वह शायद अपने नए आविष्कार का प्रदर्शन कर रही होगी। She will probably be demonstrating her new invention. She will probably be demonstrating her new invention. मैं तब तक भी उस संगीत कार्यक्रम का टिकट ढूंढ रहा हूँगा। I will still be searching for the ticket to that concert until then. I will still be searching for the ticket to that concert until then. क्या इंजीनियर पुल के डिजाइन पर काम कर रहे होंगे? Will the engineers be working on the bridge design? Will the engineers be working on the bridge design? इस साल देश भर में कई चुनाव हो रहे होंगे। This year, many elections will be taking place across the country.
This year, many elections will be taking place across the country. मैं शाम को एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँगा. I will be watching a documentary in the evening. I will be watching a documentary in the evening. जब घंटी बजेगी, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे. When the bell rings, the children will be playing in the field. When the bell rings, the children will be playing in the field. जबकि मैं खाना पका रहा हूँगा. While I will be cooking. While I will be cooking. जब तुम पहुँचोगे, मैं अपनी पिछली कहानी सुना रहा हूँगा. I will be narrating my previous story when you arrive. I will be narrating my previous story when you arrive. अगर वह मुझे फोन करेगी, तो मैं सोफे पर आराम कर रहा हूँगा. If she calls me, I will be relaxing on the sofa. If she calls me, I will be relaxing on the sofa. जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेगी, तो यात्री जल्दी से उतर रहे होंगे. When the train arrives at the station, the passengers will be hastily disembarking. When the train arrives at the station, the passengers will be hastily disembarking. तुम जब भी आओगे, वह हमेशा शिकायतें करती रहेगी. Whenever you come, she will always be complaining. Whenever you come, she will always be complaining. जब तक आप बाहर निकलेंगे, बारिश तेजी से हो रही होगी. By the time you step out, it will be raining heavily. By the time you step out, it will be raining heavily. हम खरीदारी कर रहे होंगे जबकि वे बैठक कर रहे होंगे. We will be shopping while they will be holding the meeting. We will be shopping while they will be holding the meeting. मैं रात का खाना नहीं बना रहा हूँगा अगर तुम पिज्जा ऑर्डर करोगे. I will not be preparing dinner if you order pizza. I will not be preparing dinner if you order pizza. क्या मैं तुमसे मिलते समय अपनी पुरानी नोटबुक ढूंढ रहा हूँगा? Will I be searching for my old notebook when I meet you? Will I be searching for my old notebook when I meet you? जब मैं शहर से गुजरूंगा तो बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटी पर जा रहे होंगे. When I pass through the city, many people will be going to their duties. When I pass through the city, many people will be going to their duties. हम दोनों बस का इंतजार कर रहे होंगे और गपशप कर रहे होंगे. Both of us will be waiting for the bus and gossiping. Both of us will be waiting for the bus and gossiping. उसने कहा कि जब वह आएगा, हम उसका नाम पुकार रहे होंगे. He said that when he comes, we will be calling his name. He said that when he comes, we will be calling his name. अगर तुम देर से आओगे, तो मैं तुम्हें सोने की कहानी नहीं सुना रहा हूँगा. If you come late, I will not be telling you a bedtime story. If you come late, I will not be telling you a bedtime story. जब तक मैं जवाब दूंगा, वे पहले ही दरवाजा खटखटा रहे होंगे. They will already be knocking on the door by the time I answer. They will already be knocking on the door by the time I answer. जब संगीत शुरू होगा, तो नर्तक मंच पर अपनी जगहें ले रहे होंगे. When the music starts, the dancers will be taking their places on stage. When the music starts, the dancers will be taking their places on stage. क्या बच्चे रात के खाने तक अपने खिलौनों से खेलते रहेंगे? Will the children be playing with their toys until dinner? Will the children be playing with their toys until dinner? वे 1 घंटे के लिए बहस कर रहे होंगे जब तक मैं वहां पहुंचूंगा. They will have been arguing for an hour when I get there. They will have been arguing for an hour when I get there.
जब वह प्रवेश करेगी तो हॉल में सभी लोग खड़े हो रहे होंगे। When she enters, everyone in the hall will be standing up. When she enters, everyone in the hall will be standing up. तुम शोर मत मचाओ, नहीं तो मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँगा। Don't make noise, or I will not be concentrating. Don't make noise, or I will not be concentrating. अगली सर्दियों में हम पहाड़ों में स्कीइंग कर रहे होंगे। Next winter, we will be skiing in the mountains. Next winter, we will be skiing in the mountains. मैं जल्द ही एक नया कंप्यूटर खरीद रहा हूँगा। I will be buying a new computer soon. I will be buying a new computer soon. अगले कुछ हफ्तों तक मैं एक नए शहर की खोज कर रहा हूँगा। For the next few weeks, I will be exploring a new city. For the next few weeks, I will be exploring a new city. क्या वह आगामी सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम पढ़ा रही होगी? Will she be teaching the course for the upcoming semester? Will she be teaching the course for the upcoming semester? कंपनी अगले साल अपनी नई नीति पेश कर रही होगी। The company will be introducing its new policy next year. The company will be introducing its new policy next year. तुम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे होंगे। You will not be fulfilling your responsibilities. You will not be fulfilling your responsibilities. वे हमेशा की तरह बस की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। They will be waiting for the bus as usual. They will be waiting for the bus as usual. मैं अपने छोटे भाई को अपनी कार चलाने नहीं दे रहा हूँगा। I will not be allowing my younger brother to drive my car. I will not be allowing my younger brother to drive my car. क्या वह अभी भी उस पुरानी नौकरी में काम कर रहा होगा? Will he still be working at that old job? Will he still be working at that old job? छात्र इस वर्ष के अंत तक अपनी परियोजना पूरी कर रहे होंगे। Students will be completing their project by the end of this year. Students will be completing their project by the end of this year. अगली बैठक में हम नई रणनीतियों पर चर्चा कर रहे होंगे। In the next meeting, we will be discussing new strategies. In the next meeting, we will be discussing new strategies. वे पूरी रात जश्न मना रहे होंगे और गाना गा रहे होंगे। They will be celebrating and singing all night long. They will be celebrating and singing all night long. तुम बिना अनुमति के मेरे कैमरे का उपयोग नहीं कर रहे होंगे। You will not be using my camera without permission. You will not be using my camera without permission. मैं सप्ताहांत में अपनी दादी के घर जा रहा हूँगा। I will be visiting my grandmother's house over the weekend. I will be visiting my grandmother's house over the weekend. क्या बच्चे हर छुट्टी में उसी जगह जाते रहेंगे? Will the children be going to the same place every vacation? Will the children be going to the same place every vacation? वे मुझे अनदेखा कर रहे होंगे क्योंकि मैं देर से आया। They will be ignoring me because I came late. They will be ignoring me because I came late. आप उस कंपनी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे होंगे। You will be signing a contract for that company. You will be signing a contract for that company. क्या तुम मेरे लिए एक नया मोबाइल ला रहे होंगे? Will you be bringing a new mobile for me? Will you be bringing a new mobile for me? वे अपने अगले साहसिक कार्य की योजना बना रहे होंगे। They will be planning their next adventure. They will be planning their next adventure. मुझे यकीन है कि वह अपने भाषण के लिए तैयारी कर रही होगी।
I'm sure she will be preparing for her speech. I'm sure she will be preparing for her speech. मैं अपनी पिछली गलतियों से सीख रहा हूँगा. I will be learning from my past mistakes. I will be learning from my past mistakes. जब तक हम अगली सदी में पहुंचेंगे, रोबोट मानव भाषाएं सीख रहे होंगे. By the time we reach the next century, robots will be learning human languages. By the time we reach the next century, robots will be learning human languages. क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे होंगे? Will you be deliberately disturbing me? Will you be deliberately disturbing me? वो हर संभव तरीके से मदद करने की कोशिश कर रही होगी. She will be trying to help in every possible way. She will be trying to help in every possible way. मुझे डर है कि तुम ये कहानी किसी को नहीं बता रहे होंगे. I am afraid you will not be telling this story to anyone. I am afraid you will not be telling this story to anyone. आसमान में तारे हमेशा की तरह चमक रहे होंगे. The stars in the sky will be shining as always. The stars in the sky will be shining as always. अगर तुम कल नहीं आओगे, तो हम तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस कर रहे होंगे. If you don't come tomorrow, we will be feeling your absence. If you don't come tomorrow, we will be feeling your absence. क्या वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की रणनीति बना रही होगी? Will she be devising a strategy to defeat her rival? Will she be devising a strategy to defeat her rival? मैं तुम्हें समझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँगा. I will be continuously striving to explain it to you. I will be continuously striving to explain it to you. इस जटिल मामले को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ परामर्श कर रहे होंगे. The experts will be consulting to resolve this complex matter. The experts will be consulting to resolve this complex matter. जब हम रात में वापस आएंगे, तो चौकीदार चौकस होकर निगरानी कर रहा होगा. When we return at night, the watchman will be vigilantly monitoring. When we return at night, the watchman will be vigilantly monitoring. वे अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे होंगे. They will not be taking responsibility for their defeat. They will not be taking responsibility for their defeat.